Question number 1. A boat can travel 3.5 km upstream in 40 minutes if the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream is 7:2. How much time will the boat take to cover 36 km downstream? In this question, 3.5 किलोमीटर एंड 14 मिनट कन्वर्ट करेंगे मीटर में. 3500 डिवाइड बाई 14 से ये कैंसिल होगा तो 25 एंड 0 250 मीटर पर मिनट स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम. बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो x एंड y 7:2. In this condition upstream speed 7 minus 2 is equal to 5. अपस्ट्रीम स्पीड है 5 बट 5 रिप्रेजेंट करेगा 250 को. 250 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 जा 50. 1 यूनिट इज इक्वल टू 50. डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 7 + 2 9. 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 9 5 जा 450 मीटर पर मिनट इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड. 36 किलोमीटर कवर करने के लिए टाइम इज इक्वल टू 36,000 डिवाइड बाई 450 0 कैंसिल 9 5 जा 9 4 जा 5 2 जा 80 मिनट इज द आंसर. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. Question number 2. Ram can row 6 km per hour in still water. The speed of the current is 2 km per hour. He takes 4 hours more in upstream than in the downstream for the same distance. X and Y is equal to 6 km per hour and 2 km per hour. Total distance covered minus total distance covered in upstream and downstream is equal to 4 hour. Upstream is 6 minus 2 4. Downstream is 6 and 2 8. D upon 4 minus D upon 8 is equal to 4. 8 2D minus D is equal to 4. 8 4 is 32. Distance is 32 kilometer. 12.5% is equal to 1 by 8. Old distance is equal to 8 and new distance is 8 minus 1 7. New distance होगा 32 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7. 8 4 जा एंड 7 4 जा 28 किलोमीटर. 28 किलोमीटर कवर करेंगे इन अपस्ट्रीम पोजीशन. टाइम इज इक्वल टू फॉर अपस्ट्रीम पोजीशन 28 किलोमीटर डिस्टेंस एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज 4. डिवाइड करेंगे 4 7 जा 7 आवर इज द आंसर. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3. इन फिक्स्ड टाइम सोनू स्विम्स डबल द डिस्टेंस along the current that he swims against the current if the speed of the current is 3 km per hour. Find the time required to swim against the current. Downstream and upstream. Downstream is double. Speed is double and 1. Speed of the current is y. Y is equal to downstream and upstream minus and divided by 2. ये याद रहना चाहिए आपको. Y is equal to d minus u 2 minus 1 and divided by 2. Y is equal to 1 by 2 by this condition. स्पीड ऑफ करंट है 3 तो 1 by 2 रिप्रेजेंट करता है 3 को. 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 2 6. 1 यूनिट इज इक्वल टू 6. स्पीड ओरिजिनल स्पीड है 6 2 जा 12 6 1 जा 6. ओरिजिनल टाइम इसका इनवर्स होगा 6/12. अगेंस्ट करंट के लिए टाइम है 12. सो टाइम इज 12 आवर. दिस इज आंसर. चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4. ए बोट टेक्स 26 hours for traveling downstream from point A to B and coming back to C. Midway between A and B, if the velocity of the stream is 4 km per hour and the speed of the boat in still water is 10 km per hour. X and Y is equal to 10 km per hour and 4 km per hour. Downstream and upstream
Downstream is equal to plus 10 plus 1 and upstream is equal to minus 10 minus 4 6. Distance covered in downstream and upstream total time 26. Distance in downstream 14. Distance in upstream 6 is equal to 26. A and B is the distance and C is in midway. बोट ट्रेवल करेगी यहाँ तक एंड रिवर्स यहाँ तक. अपस्ट्रीम के लिए हाफ डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई 2. d by 14 plus d by 12 is equal to 26. एल्सियम करेंगे 84 14 6 जा 12 7 जा 26 7 6 13 13 d is equal to 26 divided by 84 13 2 जा 84 2 जा 168. Distance is equal to 168 kilometer. Time is equal to 168 and for upstream divided by 6 6 2 जा 6 8 जा 28 hours is the answer. चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5. A boat travels 30 km in a river towards upstream in 6 hours. The speed of the current is 1/4 of the speed of the boat in still water. If the speed of boat makes thrice and distance is 100 km more than previous, how long will it take to cover the distance downstream? Upstream speed is equal to 30 divided by 6 5 km per hour is the upstream speed. 1/4 of the speed of the boat. X and Y. X की speed 4 and Y 1. Upstream is equal to X minus Y. 4 minus 1. Upstream is equal to 4 minus 1 is equal to 3. But upstream है 5. 3 represent करेगा 5 को. 1 unit is equal to 5 by 3. Original speed है 5 by 3 multiplied by 4. 20 by 3 and y के लिए 1 5 by 3 किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ बोट थ्राइस. इसकी स्पीड है 20 by 3 एंड मैक्स थ्राइस मल्टीप्लाई बाई थ्राइस 20 किलोमीटर पर आवर is the new speed of boat. Distance is 100 km more than previous. New distance is equal to 30 plus 100 is equal to 130 kilometer. Downstream speed is equal to 415 5. 1 unit is equal to 5 by 3. 5 by 3 is equal to 25 by 3 kilometer per hour downstream speed. But after speed increased होने पर 20 तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी x plus y is equal to x is 20 and y is same 5 by 3. 23 जा 60 and 5 65 by 3 kilometer per hour is the new speed in downstream. Time is equal to new distance is 130 and divided by 65 by 3. 65 and multiply by 3. 13 5 ja and 5 2 ja 3 2 ja 6 hour is the answer.